advice, sir, coming from you. I think it was eye-opening for most of us. Thank you so much. Now, related to this topic, we also have a doctor on board. Dr. Vikram Bedi is here. I'm sure, Dr. Bedi, you have something to share in terms of how to take care of yourself in the day-to-day life, as we might have to live with this situation, I don't know, for maybe next few months. Yeah, thanks, Sanya. Good evening to Puneet sir and good evening to everyone. Hello Ji, how are you? Hi Vikram. Good, sir, good. So basically, the medical pundits, what they are saying right now is that the prediction is that this might become a seasonal flu, and we might have to start living with the fear, and we might have to start living in a different way from now onwards. Basically, see, the lockdown is temporary. We would have to eventually go out maybe after 2 months or let's say 1 month, but I think it's about time that we realize that we would have to live with this virus. So how do you suggest, sir, the pregnant woman and the elderly and basically all of us, how should we treat it in future so that we deal with it properly? What's your take on it, sir? Vikram, I would say first thing is very important that all the precautions what the medical world has told us, we must follow them. Like, mask is very important. You see, because ये क्या है कि how we have influenza, flu कैसे होता है, उस तरह we have to live with it. You never know, like maybe 50% of India is already suffering with this. They're just carriers. It is there. So what happens is, but हमारा बताऊं, देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हम हिंदुस्तानियों का, हमारे यहाँ पे मलेरिया है, डेंगू है, इतना कंटामिनेटेड फूड मिलता है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हम ऐसी हवा में जी रहे हैं. सो हमारे यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड में क्या, आप इटली देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे पोल्यूशन नाम की चीज ही नहीं. सो वहां पे फॉर देम दे कैन नॉट डील विद इट. बट वी इंडियंस जो है हमारे यहाँ पे, और आप सोशल नॉर्म्स को फॉलो करिए. मास्क आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज जो है. आप डाइट सही रखिए. Diet has to be fine. Keep washing your hands, which is very important. Then mask is going to become, I think so, very, it's going to be like a second feature. Like everywhere you'll see people, there is a thing of the future. Like, okay, yaar, it is there. पहले कैसे होता था, भी फ्लू हुआ यार, मुझे फ्लू हुआ है, मैं तो यार हफ्ते के लिए दवाई ले रहा हूँ. इसका भी आपको पता ही है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन is there, and I believe they say it is not only the hydroxychloroquine. I believe erythromycin and zinc tablet is the combination what they've been giving to these COVID warriors. Yeah, that's true, sir. Zinc is basically one of the most important immunity boosters. So yes, that's So it's a combination. Of course, I've got friends from Zydus, the pharmaceutical firms. Yeah. उन्होंने मुझे बताया है कि it is hydroxychloroquine, erythromycin, and zinc tablets. इसका कॉम्बिनेशन वो लोग देते हैं. जो दिया है, जो लोग ठीक हुए, eventually, maybe it's a matter of time. The world will definitely, human race is very resilient by nature. We're going to fight it out. We're going to come out of it. But जब तक है, women have to be careful. Kids have to be careful. You can't say कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा. वो नहीं चलेगा. आपको ध्यान देना पड़ेगा. मास्क, social distancing रखिए. मास्क जरूर पहनिए if you're meeting people. And then thermometer जो है, checking the temperature, body temperature, ये लग जाएगा. With I think 2 महीने में everybody's going to have that. At workplaces also, like we also contemplating once it opens up, like all the offices will have that. Whosoever person walks inside, उसका temperature लिया जाएगा. उसका temperature अगर ठीक है, भैया तू आ, बैठ, बात करो, तो distance होगा करके उसके बाद में ultimately देखिए जो पुराने हमारे जो थे, अब हाय डूड, हाय ब्रो, हम आके हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं, अब से नमस्कार पे आ गए हैं सब लोग. Actually, yes. So that is there. तो वो social distancing वही है. टच, ग्लव्स पहनना, लोग ग्लव्स पहनेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे किसी से, हाथ जोड़ेंगे, एंड बाहर जाएंगे तो एहतियात बरतेंगे. पीपल विल हैव टू डू दैट. एंड देन उसके साथ में स्पेशली फॉर women, pregnant ladies, for घर वालों के लिए, is make your immune system strong. Right food, right diet, सही खाइए, and work out. Make your lungs strong. Inhale, deep inhaling, exhaling.
अनुलोम विलोम करिए, अपनी नाड़ियों को ठीक रखिए, जो आपकी जो नाड़ियां हैं, आपकी ब्रीदिंग सही करिए, भस्त्र रेखा है, देन कपाल भाती है. देयर आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं योगा की. कपाल भाती, भस्त्र रेखा है, कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, जालंधर बंद है. So basically just sit down, deep inhale with a count of 10, deep exhale with a count of 10, deep inhale, deep exhale. These are the things, make your lungs strong. That's what you have to do. जैसे सर आपने बोला like the namaste वाला thing, we see in the pregnant females there is a myth, Indian myth, family कहती है 40 दिन तक बाहर नहीं जाना pregnancy के बाद. हाँ बिल्कुल, कोई So this is where yes, we see कि they are immunocompromised. That is the weakest time where they can catch things. So now we are seeing कि पुरानी चीजों से हमें काफी चीजें relate करने को मिल रही है. हाँ भाई, कि देखिए वो औरत को जो होता था कि लेडीज ऑफ द हाउस, उनको एक अलग रख दिया जाता था, ताकि क्या कोई आए, कोई बीमारी नजला ना दे जाए. अभी भी होता है, जैसे घर में किसी बच्चे को अगर खांसी सर्दी हो जाए, या किसी बुजुर्ग को, कि नहीं छोटे बच्चे के पास नहीं जाना यार, छोटे बच्चे को आप गोद में मत लीजिएगा, क्या आप उसको दे सकते हैं. सो जो हमारे ये जो छुआछूत, जो छोटा बड़ा परहेज, जिसे कहते हैं ना, परहेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्योर. सो दैट वाज देयर, हमेशा रहा है. इवन मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे होता है कि जब कि बच्चा पैदा होता है तो फॉर 40 डेज बच्चे को बाहर नहीं निकालते, because the child is more immune to, more prone to, get any infection. Very true. So these things we have to take care. Right, sir. I think that was again very learning and very interesting too, and especially to how to take care of yourselves while sitting at home. Thank you, Dr. Bedi. Sir,